Good evening to everyone. Welcome back to our GAUSSIAN tutorial. तो आज हमें फास्ट मेकानिक्स रा जोटा CC2 तमर अछि ओके सो मेकानिक्स हमें स्टार्ट करबा जोटा कि कोर पेपर CC2 ओके CC2 रा आज फर्स्ट क्लास करबा जोटा कि मेकानिक्स ओके ओके तो देखो लेट करबानी स्टार्ट करबा जोटा कि हमें सेपटरे हमर मैथमेटिकल फिजिक्स चलछि ओके CC1 एठी हमें बे CC2 स्टार्ट कर दबा मेकानिक्स ओके तो देखो फास्ट हमें पढ़िबा सेंटर ऑफ मास ओके हमें सिलेबस अनुसार जीवा फर्स्ट यूनिट रे तमरो अछि सेंटर ऑफ मास बा रोटेशनल डायनामिक्स अछि ओके सो रोटेशनल डायनामिक्स परे हमरो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अछि ओके सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़िबा सो हमें सिस्टमैटिकली हमें यूनिट अनुसार जीवा ओके सो फर्स्ट यूनिट रे तमरो अछि सेंटर ऑफ मास तो राइट डाउन सेंटर ऑफ मास ओके तो सेंटर ऑफ मास कोन जिंस ताको हमें देखो हमें प्लस 2 रे गोटे टाइप रो पढ़थिले एबे हमें प्लस 2 रे टिके एडवांस टाइप रो पढ़िबा ओके ग्रेजुएशन लेवल ले टिके एडवांस टाइप रो पढ़िबा सो पर्टिकुलर डेरिवेशन को मार्क करिवो समस्ते ओके जहां लिखुची तमे देखो तमे हमरो टेलीग्राम चैनल बा व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन करले ऑब्वियसली तमे पाई जीवो पीडीएफ बट तुमको मु रेकमेंड करबी कि तुमको प्रैक्टिस से जीवो तुम एठू आराम से नोट्स बनाओ मु जहां भी नोट्स बनाउची आराम से वीडियो को पॉज करके नॉलेज फ्लो फ्रेम रे करके ओके सो तुम आराम से नोट बनाओ ओके सो बेटर हो तुमको एग्जाम रे लिखिबा पई आ अंडरस्टैंडिंग पई ओके खाली देखिए कि बुझी देले हबनी राइटिंग प्रैक्टिस भी दरकार ओके तो देखो सेंटर ऑफ मास कोन लेट्स सपोज हम पाखरे कोन अछि सेंटर ऑफ मास को मेजर करिवा पई इट इज अ डिस्टेंस ओके सेंटर ऑफ मास गोटे पोजीशन ओके पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ओके सो इट इज अ डिस्टेंस होय हम गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना पई पड़िबो जोटु कि हमें मेजर करिवा ओके गोटे सेंटर ऑफ मास को हमें मेजर कर परिबा डिस्टेंस केते डिस्टेंस रे सेंटर ऑफ मास अछि लेट्स सपोज x y एंड z ओके लेट्स सपोज इटा गोटे सिस्टम जोतरे कि बहुत पार्टिकल अछि ओके लेट्स सपोज सेठी केते अछि nth नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 okay let's suppose it is 3 okay let's suppose it is ith particle okay let's suppose it is nth particle okay so similarly r particle mass wala m1 second particle la mass m2 third particle la mass m3 ith particle la mass mn okay nth particle la mass mnth okay so mi तो mi ओके ओके तो बेसिकली हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट देखिबा ओके पोजीशन कोऑर्डिनेट तो लेट्स सपोज वन पार्टिकुलर पोजीशन कोऑर्डिनेट हला विथ रिस्पेक्ट टू o एटा हला ri सॉरी r1 ओके r1 सिमिलरली r2 रहला कोन r2 2 रो पोजीशन वेक्टर हला केते r2 एठी पहुंचिया पई हमको r2 वेक्टर दरकार ओके सेमती n वेक्टर को जीवा पई nth पार्टिकल को जीवा पई हमको के को वेक्टर दरकार ना rn वेक्टर ओके सेमती ith पार्टिकल को जीवा पई ri वेक्टर दरकार ओके कोटू मेजर करले नाही o विथ रिस्पेक्ट टू o सो हमें वर्डिंग रे लिखिबा सो देखो पूरा सिस्टमैटिकली हमें पढिबा हला कोनोसी स्टेप स्किप करबानी पूरा सिस्टमैटिकली पढिबा बिकॉज़ ग्रेजुएशन ला हम पाकर बहुत टाइम अछि ए सब जिंस को छोट 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 चीज को मार्क करिया पे ओके तो जेतरो तुम एक्सपीरियंस हे जिवो तरो तुम जिंस को स्किप करि पारियो बट एबे तुमको सेमेस्टर लेखिया पे प्रत्येक गोटे जिंस दरकार ओके तो राइट डाउन जहां लिखिले हमें डायग्राम रे सेटा हमें लिखिबा ओके कंसीडर a system which consists of particles 1 2 3 up to n of masses m1 m2 m3 up to mi up to mn okay respectively okay so basically center of mass ro formula kon कहूची बा सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओके आरसी बाला को हमें आरसीएम भी कहि परिबा ओके समेशन i is equal to 1 to n n number of particle अछि mi
ri vector upon total m mass of the part कौन total system बाको आम लिख परिबा m where m is equal to summation I is equal to 1 to n ओके mi अच्छा समेशन माने बुझी पड़छ ना समेशन देखो आको आम केमति लिख परिबा m1 plus m2 plus m3 up to mi up to mn ओके आको आम शॉर्ट फॉर्म रे लिखचंदी समेशन ओवर केतरा पार्टिकल अछि ना गोटे रु n नंबर पार्टिकल अछि आ समस्तंकर मास केते i रहला कोन रिपीटेड इंडेक्स येला रिपीट करूची आइटा 1 होची 1 लु कुडी पर्यंत जाउची n पर्यंत आ समेशन माने ऐड करि जिबा ओके ता माने ला एटा तो बेसिकली एटा हला फार्मूला फॉर पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ओके एमन लिखिबा पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एटा हला r माने जनरल कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन ला हम लिखि तो हमें 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन तीनटा कोऑर्डिनेट अछि तो तीनटा कोऑर्डिनेट रे हम लिखिबा लेट्स सपोज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ओके बा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर दबानी ओके 1 upon m m हला टोटल सिस्टम रो मास समेशन I is equal to 1 to n ओके mi x कोऑर्डिनेट ऑफ ith पार्टिकल देखो एटी जेतु 3 डायमेंशन अछि सो समस्त केतरा कोऑर्डिनेट थिबो तीनटा कोऑर्डिनेट थिबो फर्स्ट पार्टिकल तीनटा कोऑर्डिनेट कोन x1 x2 सॉरी x1 y1 और z1 ओके सिमिलरली सेकंड पार्टिकल वाला x2 y2 z2 सेमती सेंटर ऑफ मास जहां भी हबो ओके सेंटर ऑफ मास तार भी तीनटा कोऑर्डिनेट रहइबो कोन xc yc एंड zc तो 1 upon m summation I is equal to 1 to n mi yi okay similarly xc is equal to 1 upon m summation I is equal to 1 to n mi zi okay so individual coordinate पाया पे हमें ये को यूज कर ओके तो देखो ये हैला नॉर्मल सेंटर ऑफ मास रा कांसेप्ट ओके सेंटर ऑफ मास एमिति गोटे जिंस जोटा कि सब पूरा मास गोटे पॉइंट रे कंसंट्रेट करिवो सेही पॉइंट रो हमको कोऑर्डिनेट बाहर करियार अछि हला पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास माने हला गोटे जेकोनसी ऑब्जेक्ट रो से कोन कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट हो बा डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हो ताकू आमे गोटे सिंगल पॉइंट रे सब मास को कंसंट्रेट करिबा से कंसंट्रेट मास रो जदि हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन करि परिबा दैट इज द आरसीएम बा पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ओके ओके ताकू हमें अनदर वे रे भी लिखि परिबा हमें केमिति ना देखो the center of mass of a system of particles is a point about which the sum of mass momenta okay हम कहि बेटा कोन of all the particles vanishes okay देखो mass momenta कोन mass momenta हला mi ri dash vector okay mi ri dash vector is equal to 0 एटा कहला mass momenta अच्छा ri dash कोन ri तो हला with respect to o रे ओके देखो ri dash को बुझिया पहले हमको गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नबा जोटा कि सही सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके थ्री डायमेंशनल ओके x y और z हला o रेस्पेक्ट रे हमें o रिलेटिव टू o रे हमें मेजर करछन सेंटर ऑफ मास एटा थिला हमर सिस्टम लेट्स सपोज ए टाइप रो सिस्टम एटा हला पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास c ओके तो o c हबो rc ये हबो rc पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बिकॉज़ बट लेट्स सपोज ए सिस्टम रे दीटा पार्टिकल अछि गोटे हला 1 गोटे हला 2 तो o रु आमे 1 पार्टिकल को जहार मास थिला m1 ताकू आमे पोजीशन दोथिले r1 वेक्टर ओके जहार जो सेकंड पार्टिकल ओके तार पोजीशन केते ना r2 क्लियर ओके
तो ये हला R2 ये हला R1 बिकॉज बट सी सेंटर ऑफ मास रू M1 को जो पोजीशन हमें टाणीबा बा जो पोजीशन हमें आकु विथ रेस्पेक्ट टू C पोजीशन ऑफ M1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ताको हमें दबा R1 डैश सेमती पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हला R2 डैश ओके तो सबु पार्टिकल जदि हमें मास आकु कहंती मास मोमेंटा को ऐड करिबा देन आंसर हबो केते 0 लेट सपोज ओके गोटे सिस्टम रे दीटा पार्टिकल अछि गोटे हला M1 आ गोटे हला M2 ओके तार सेंटर ऑफ मास हला C ए मझिरे C M1 लु C हला R1 M2 रु स्ट्रेट लाइन ले अछंती हला R2 ओके ओके तो वर्तमान R1 माने A2 एपट को पोजीशन R2 माने A2 एपट को पोजीशन तो लेफ्ट टू राइट को बोले हमें पॉजिटिव नबा सो समेशन I इज इक्वल टू 1 केतरा पार्टिकल अछि दीटा पार्टिकल तो mi ri डैश वेक्टर इज इक्वल टू 0 तो फर्स्ट m जगह रे कर I जगह के पकेबा 1 m1 r1 डैश ओके r1 डैश प्लस m2 r2 डैश इज इक्वल टू 0 देखो ए r1 डैश टा केते एटी r1 बट लेफ्ट को आसी माने नेगेटिव नबा हमें देखो ए पट को नबा नेगेटिव ओके ए पट को नबा पॉजिटिव ओके ए पट को नबा पॉजिटिव ए पट को नबा नेगेटिव तो जेतु r1 टा कोन लेफ्ट रे अछि सो माइनस m1 r1 लिखिबा r1 वेक्टर प्लस m2 r2 टा कोन पॉजिटिव अछि इज इक्वल टू 0 तो हमें कहि परिबा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 ओके तो एटा तमे पढि दियो प्लस 2 रे m1 m2 दैट इज द मास मोमेंटा इज इक्वल टू 0 एटा बहुत जगह में यूज करबा एटा को दे दोची इक्वेशन ए ओके इक्वेशन ए एटा में बहुत जगह यूज करबा mi ri डैश ई ri टा मन रखतिबो ri डैश माने आपको मेजर करा जाउची विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ओके ओके देखो आ ऊपर गोटे स्मॉल क्वेश्चन हमें सॉल्व करबा ओके सो लेखो क्वेश्चन नंबर 1 ओके so three particles of the same mass lie in the xy plane okay the xy coordinates of their particles coordinates the xy coordinates of their position तांको पोजीशन लो xy कोऑर्डिनेट कोन कोन अछि ना 1 1 2 2 and 3 3 respectively okay the xy coordinate of the center of mass is option अछि 1 2 2 2 4 4 1 और 3 ओके ओके सो देखो हमें जानचंती कोन तीनटा पार्टिकल अछि सो आर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें जानचंती 1 upon m summation I is equal to 1 2 3 okay mi ri vector okay mi ri vector okay so x coordinate of center of mass is equal to 1 upon m okay total system of mass summation I is equal to mi xi okay so तीनटा का पार्टिकल कोऑर्डिनेट 1 1 2 2 3 3 ओके ओके तो इटा हला x1 y1 x2 y2 x3 y3 ओके so total center of mass हमें काढिबा xc is equal to देखो total summation of mass माने total mass means m1 plus m2 plus m3 okay
summation mi xi. Okay, mi माने कौन फर्स्ट ईयर मास so m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 এটা হল actual form x0. ओके ओके सो एबे पुट करबा मास समस्तंकर समान सो मास मु m नै गली x1 जगह केते पुट करबी 1 मास समान x2 जगह केते पुट करबी 2 प्लस मास समान x जगह केते पुट करबी 3 अपॉन तीनटांग मास m m m तो केते गला 3m. तो ऊपर देखो अच्छी m प्लस 2m प्लस 3 दुले 5 ठीक है 6 ओके 6m अपॉन 3m तो 2 पळे आसला हैला x पळे आसला 2 सेमती yc कैलकुलेशन करबा y कोऑर्डिनेट सेमती कोन लिखिबा m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 upon m1 plus m2 plus m3. Similarly एठी भी कोन करबो ना m1 जगह 1 पुट करबा सॉरी m1 जगह m पुट करबा y1 जगह केते y1 देखो 1 अछि ओके so 1 plus m into 2 plus m into 3 upon m plus m plus m. So ये भी पळे आसीबा केते 6m divided by 3m गोटे आंसर आसीबो 2. तो xy सेंटर ऑफ मास x और y कोऑर्डिनेट हे गला केते 2 आउ 2. ओके सो आंसर कोन हे जिवो देखो ऑप्शन कोटा ठीक हे जिवो करेक्ट. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ओके सिंपल क्वेश्चन थिला. ओके जस्ट हमें पढिले तार एप्लीकेशन हमें केमती यूज करछन देख देले ठीक अछि. ई टाइप रे हमें सब इंटरेस्टिंग लागिबो. ओके सो क्लास धीरे धीरे फर्दर पढिले हमें इंटरेस्टिंग लागिबो. ओके तो देखो write down velocity and acceleration of center of mass. Velocity and acceleration of the center of mass of a system. Okay so write down the velocity ताको हमें vc द्वारा डिनोट करिबा of the center of mass of the system is defined as the time rate of change of its position vector rc. okay तो एक्चुअली vc कोन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हला पोजीशन को हमें कोन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जदी डेरिवेटिव करबा कार पोजीशन ऑफ कार सेंटर ऑफ मास रो. ओके so basically vc is equal to rate of change of कार ना पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास rc. ओके तो आपको हमें डेरिवेटिव करबा क्लियर. ओके तो d by dt ऑफ हमें rc को जानछन केते ना 1 upon m summation over I to n I is equal to 1 to n. okay so mi ri vector. okay so mi टा कोन कांस्टेंट. okay so mi टा मास चेंज हो कि पोजीशन किंतु चेंज होबो पार्टिकल चेंज हेले. okay तो आपको हम लिख परिबा 1 upon m डेरिवेटिव बाहर पळे आसला. okay summation over I. okay so mi dri upon dt. okay so vc vector is equal to 1 upon m summation over I. okay so mi येला vi देखो येला with respect to particular velocity vi. okay so that is important. okay velocity center of mass velocity 1 upon m vi. let's suppose particle nth particle अछि. okay ताको हम केमते लिखिबा ना velocity net velocity is equal to केते लिखिबा ना vc center of mass velocity रा total system रा center of mass vc is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 up to mn vn upon m1 plus m2 plus m3 up to mn. clear. okay
तो एबे पढ़ले वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तापर हमें जानिबा एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी रो छोट क्वेश्चन कर दबा से रिलेटेड। ओके देख क्वेश्चन लेखा a gal of mass write down a gal of mass 40 kg walks along a stationary beam horizontal beam. Okay, stationary horizontal beam. So it like horizontal beam of uniform density. Full stop. The mass of the beam is 25 kg. Okay, the girl walks with speed 1 meter per second. Okay, compute the velocity of center of mass of the girl and the beam. देखो क्वेश्चन मैं तुमको बुझे दूची जेमती प्लांक थाए प्लांक आउ गोटे बॉय चलिले ओके सो प्लांक कौन करे फ्रिक्शन लेस पछकू जाए या आगू जाए ओके जेमती डंगा ऊपर आमे डंगा को जदी पुश करबा पछकू ओके सो आमे आगू को जीबा ओके तो डंगा पछकू जीबा आमे आगू जीबा सेंटर ऑफ मास जेहेतु एक्सटर्नल फोर्स पडुनी सेंटर ऑफ मास मूव हबो नाही तो एटी सेम केस अछि एटी लेट्स सपोज हॉरिजॉन्टल बीम अछि ओके हॉरिजॉन्टल बीम अछि बीम रो मास केते ना मास ऑफ बीम इज इक्वल टू 25 kg ओके ता ऊपरे गोटे गर्ल सी केते 1 मीटर पर सेकंड रे आगु को मूव करूची ओके आ तार मास ऑफ द गर्ल हैला 40 kg ओके से कहूची ई सिस्टम रो ए टोटल सिस्टम जदि नबा सिस्टम रे केतरा पार्टिकल अछि दुटा पार्टिकल सो सिस्टम रो सेंटर ऑफ मास रो वेलोसिटी केते एबे जस्ट पढिले हमें ओके सो गिवन डाटा रे हम लिख दबा गिवन डाटा रे ओके गिवन डाटा कौन कही ना मास ऑफ बीम इज इक्वल टू 25 kg ओके मास ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 40 kg ओके एंड वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू ओके कहते अछि 1 मीटर पर सेकंड ओके सो देखो एट रेस्ट रे कहितबो जेतले वाक ये कर नथिला स्टेशनरी देखो स्टेशनरी कहिछि सो ऑब्वियसली बीम रो वेलोसिटी किछ नाही सो बीम रो वेलोसिटी हला केते 0 so basically system रे दीटा पार्टिकल अछि so velocity of center of mass is equal to m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 simple okay so vc is equal to m1 जगह कोन पकेबा जहार मास तार वेलोसिटी so mass of beam so 25 into तार वेलोसिटी 0 plus mass of 2 माने गाल ओके गाल रो मास केते ना 40 kg into से 1 मीटर पर सेकंड रे जाउची आ दीटांकर मास हला 25 प्लस 40 ओके तो 40 डिवाइडेड बाय येला 40 से हला 25 40 25 केते 65 ओके सो 5 रे काटले 11 पंचा 65 ओके सॉरी सॉरी 12 पंचा 60 13 पंचा 65 ओके सो 8 पंचा 40 ओके 8 by 10 ओके एतिकी मीटर पर सेकंड ओके 18 by 13 मीटर पर सेकंड ओके तो बेसिकली ए टाइप रो क्वेश्चन हमें छोट छोट क्वेश्चन हमें देखि परिबा सेमेस्टर एग्जाम रे जोटा कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स आसीबो बहुत सारा प्रॉब्लम मु करेबी इंटरेस्टिंग लागिबो तुमको थ्योरी साइड ओके सिमिलरली एबे हमें देखिबा वेलोसिटी पढिले सिमिलरली हमें एक्सेलरेशन पढिबो ओके ओके तो एडी जो पढिले vc देखो जो एटा इंपोर्टेंट ओके मन रखिबो आको ए जो पढले vc where vc is equal to कौन ना समेशन ए जो vi ओके so basically एट तमे लिखि परिबो ए जो vi so where
Vi is d by dt of Ri vector. Okay, is the velocity of the ith particle, is the velocity of ith particle, velocity of the ith particle of the system. Okay, okay. So एबे हमें देखिबा acceleration. Okay, simply हमें acceleration देखिबा. So write down the acceleration AC of the center of mass of the system is defined as the rate of change of its velocity of rate of change of velocity of VC, okay, of center of mass. Okay, so velocity को हमें जब दी ताले acceleration of center of mass is equal to rate of change of velocity of center of mass. Okay, so d by dt. Okay, so vc रो definition हमें लिखिबा 1 upon m summation over I mi ri vector. Okay, okay, so 1 upon m बाहर पड़े आसला. Okay, so summation over I, so mi dvi upon dt. Okay, so 1 upon m summation over I mi, ये देखो आपको लिखिबा ai. Okay, so ac is equal to बा हमें लिख परिबा ac is equal to m1 a1 plus m2 a2 up to mn an upon total m अच्छी देखो m माने कौन m1 plus m total mass of the system m3 up to mn. Clear? This is the oscillation of the center of mass. It is individual oscillation, then it is center of mass oscillation. Clear? Okay, so आउ लिखिया में पड़िबनी. So where like the बैठी where ai vector which is equal to d vi vector upon dt is the acceleration of the ith particle of the system. Okay, okay, तो आमे पढ़िले पोजीशन, तापर पढ़ले वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तापर पढ़ले एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. एबे पढ़िबा लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ओके, सो linear momentum of the system of particles. Okay, okay, देखो तो आमे जानी चंदी मोमेंटम इज इक्वल टू ith पार्टिकल मोमेंटम इज इक्वल टू mi vi. ओके, mi vi. ओके, बा mv गोटे पार्टिकल pi p1 इज इक्वल टू m1 v1. सो ith पार्टिकल हला mi vi. सो टोटल लिनियर मोमेंटम केते हबो? So the total linear momentum of the system is total momentum p vector is equal to summation over I जतरे पार्टिकल थिबे pi is equal to summation over I is equal to 1 to n mi vi. ओके, तो मु कोन कली गोटे मास मल्टीप्लाई कली. ओके, समेशन ओवर आई mi vi गोटे मास कोन कली डिवाइड कली. ओके, ओके, देखो तो p वेक्टर इज इक्वल टू. ओके, तो ये हला कोन टोटल मास km. ओके, सो m देखो एटा हला डेफिनेशन कोन समेशन mi vi upon m वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो टोटल मोमेंटम हला linear momentum हला the product of mass total mass. So linear momentum
linear momentum is equal to total mass of the system into velocity of center of mass. Okay, so that is the linear momentum. Okay, okay, so basically एबे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन देखिबा. ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें केमती देखो एक्चुअली एटा तमे शिखिबा कथा. ओके, केमती लेखा होची, केमती समेशन लेखा होची बुझिबा कथा. ऑलरेडी तो तमे जानिचो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें केमती लेखंती, बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल पई हमें केमती इक्वेशन ऑफ मोशन लेखिबा सेटा हमें देखिबा. ओके, तो ओके, write down equation of motion for a system of particle. System of particles. Okay, so write down, consider a system, of n particles, 1 2 3 up to n, of masses m1 m2 up to mn respectively. Each particle of the system interacts with each other and with the environment. ओके, तो सिस्टम रे जितने भी पार्टिकल अछंती से माने दी प्रकार इंटरैक्ट करि परिबे गोटे अन्य पार्टिकल सहित आ गोटे एनवायरनमेंट सहित. ओके, ए दीटा ही पॉसिबल. ओके, सो सेति पई 10 each particle is acted upon by two type of forces. Okay, two type of forces. One is external force, second है internal force. ओके, ओके, तो यदि हमें गोटे पार्टिकल को नबा तो द नेट फोर्स acting on ith particle of the system is total ith particle उपरे fi उपरे केते फोर्स पडुची ना fi एक्सटर्नल केते फोर्स पडुची प्लस इंटरनल केते फोर्स पडुची. fi उपरे int इंटरनल केते फोर्स पडुची, दैट इज द टोटल. सॉरी, टोटल फोर्स केते पडुची. ओके, एक्सटर्नल आवला इंटरनल. ओके, सो where FIE net external force acting on the ith particle. So FI internal net internal force internal force exerted on the ith particle
by the n minus 1 n minus 1 n माइनस देख गोटे पार्टिकल को छाड़ी देले n पार्टिकल अछि जो देख गोटे पार्टिकल ऊपर से निजे केबे फोर्स पके परिबनी बाकी पार्टिकल फोर्स पकेबे सेति पई बाकी हला केते n minus 1 अदर पार्टिकल्स ओके एति की फोर्स ता ऊपर पड़े ओके तो हमें लिखि परिबा if I k means I ऊपर k particle force पकोच is the if I k is the force on the ith particle due to kth particle बुझेला ओके then ताले कौन हम टोटल एफ आई रो जो इंटरनल फोर्स अच्छी दैट इज इक्वल टू समेसन के इज इक्वल टू 1 टू n हमें लिखिबा एफ आई ऊपर के फोर्स पकोची ओके एठी हम लिखिबा आई नॉट इक्वल टू के को पई ना से निजे ऊपर फोर्स पके परिबा नाही आई ऊपर फोर्स पके परिबा नाही सो एफ आई इज इक्वल टू 0 ओके एटा में कंडीशन इंपोज कर ओके एटा में कंडीशन इंपोज कर ओके तो ये टोटल पार्टिकल सो एफ आई फोर्स टोटल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स को हम लिख परिबा समेशन ओवर k इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई के ओके एठी हम लिख परिबा आई नॉट इक्वल टू ओके ओके एठी कंडीशन इंपोज कर देले ओके सो वर्तमान ये ith पार्टिकल पे इक्वेशन लिखले वर्तमान इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ith पार्टिकल पे लिखिबा ओके so the equation of motion of the ith particle is ith particle equation of motion जानते force is equal to mass of ith particle into acceleration r I double dot is equal to f I external plus summation k is equal to 1 to n I not equal to k f I k vector okay so where r I vector double dot is the acceleration of the ith particle okay so where r I double dot is the acceleration of the ith particle so basically देखो आमे कोन नेले आमे गोटे सिस्टम नेले सिस्टम रे दी प्रकार फोर्स थाए गोटे हला एक्सटर्नल गोटे हला इंटरनल फोर्स ता अन्य पार्टिकल ith पार्टिकल ऊपर पकेबे सो आमे कोन नेले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिबा पई आमे मास इनटू एक्सेलरेशन ith पार्टिकल लिखले ओके देन आमे टोटल समेशन करबा कहा ऊपर ना टोटल सिस्टम ऊपर ओके तो समेशन आई कितना पार्टिकल थिबे आर आई डबल डॉट एपटे समेशन करले माने एपटे भी एक्सटर्नल फोर्स सब समेशन करबा जो सब पार्टिकल ऊपर जति एक्सटर्नल फोर्स पडुचंदी ओके तो प्लस इट इज समेशन आई ओके इज इक्वल टू 1 टू n समेशन एठी थिला कोन k इज इक्वल टू 1 टू n ओके f I k ओके सो एठी हम लिख दबा i नॉट इक्वल टू k ओके एटा हम लिख परिबा ओके नेक्स्ट स्टेप देखो समेशन i m I r I डबल डॉट is equal to summation over I f I external plus aku मैं लिख परिबी half okay summation I is equal to 1 to n summation k is equal to 1 to n f I k plus f k I एमती लिख परिबी कि नहीं हाफ करके दिटा को प्लस कर परिबी बिकॉज़ I के जहा के I से देखो F1 2 ऊपर फोर्स पकेबा जहा 2 1 ऊपर फोर्स पकेबा से हो कि नहीं तो एठी हमें अज्यूम करिबा ओके न्यूटन थर्ड लॉ here we assume that mutual interaction
mutual interaction forces between each other obeys Newton's third law of motion. Okay, every action has its equal and opposite reaction. Okay, so 1 2 ऊपर जति फोर्स पकेबो 2p 1 ऊपर फोर्स पकेबो तो एटा को कहले ताले हम एटे कहि परिबा f I k is equal to minus f k I obviously ये तापरु जो डायरेक्शन ले फोर्स पकेबो तापरु opposite direction ले फोर्स पकेबो तो एटा हम जानिबा f I k plus f k I is equal to 0. ओके तो ताले ए टर्मटा कोन हेगला is equal to 0 वैनिश हेगला. ओके ओके सो देखो नेक्स्ट हमें कौन करिबा ना टोटल हमें फोर्स को लिखिबा समेशन I is equal to 1 to n mi ri double dot एपड हला मास इनटू एक्सेलरेशन is equal to external force fi e. ओके ओके so summation I mi ri double dot देखो टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स सब पार्टिकल माने नेट एक्सटर्नल फोर्स fe. ओके so is the net external force. Okay eta fe tala net external force net external. okay okay ताले हमें जानि चंती जे पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास so the position of the center of mass of the system is position of the center of mass rc vector कहते हैं. Now 1 upon m summation over I mi ri vector. okay mi ri vector एडाला position of the center of mass ताको हमें थोड़े डेरिवेटिव करिबा drc upon dt. तो 1 upon m पळे आसला summation over I mi तो एठी ri गोटे डॉट आसीबो पुन ता कोन करिबा आउथर डेरिवेटिव करिबा आको हम लिख परिबा आको हम कोन लिख परिबा rc डॉट पुन आउथर डेरिवेटिव करिबा d स्क्वायर rc upon dt स्क्वायर आको हम लिख परिबा rc डबल डॉट इज इक्वल टू 1 upon m summation over I mi ri डबल डॉट. तो ये देखो कौन अच्छी mi ri डबल डॉट. ओके आज अगर हमें कौन पुट करिबा ना m into rc तो summation over I mi ri डबल डॉट इज इक्वल टू कैपिटल M into rc डबल डॉट. बुझ पाइला ना. ओके तो देखो ए m टा को मल्टीप्लाई करली. ओके सो एटा को यूज करबी कोठी ना एठी यूज करबी. ओके देखो एठी यूज करबी कोन लिखबी ना m rc double dot is equal to f external. ओके by external force. ओके ताले एटा हमें कोन जानले कि the net external force acting on the system of particles is the product of the total mass of the system, obviously total mass, and the acceleration of the center of mass. Acceleration of the center of mass, obviously. okay so rc double dot माने कोन acceleration of the center of mass. okay so जति external force 0 हला गोटे कंडीशन नबा if the net external force okay जोटा कि f e okay is equal to 0. if the net external force f is equal to 0 ताले हम लिख परिबा m rc
डबल डॉट इज इक्वल टू 0 ओके सो आपको हमें लिख परिबा m d by dt of rc सिंगल डॉट इक्वल टू 0 ओके जेतु मास टा कांस्टेंट सो मास टा को मैं लिख परिबी m into rc वेक्टर ओके इज इक्वल टू 0 ओके तो जेकोसी देखो ओके सो जेकोसी डेरिवेटिव केतळे 0 आसे गोटे कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 आसे ऑब्वियसली ओके 0 डेरिवेटिव 0 आसे नले कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 आसे तो हम लिख परिबा m into rc dot is equal to constant ओके सो मास तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है ओके मास तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है सो rc डॉट टा कोन vc नुए rc डॉट हला कोन वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट तो एटु हमें जानिले कि जदी एक्सटर्नल फोर्स 0 आसीबो ओके तो राइट डाउन इफ the net external force acting on a system is 0 the center of mass of the system moves with constant velocity moves with constant velocity এটা হলা কোন constant velocity মানে কোন the center of mass frame is a inertial frame एक्चुअली इनर्शियल ताले इनर्शियल फ्रेम में कौन जान ले जो फ्रेम टा रेस्ट जो कौन सी फ्रेम आइदर वेलोसिटी 0 o और o डैश कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव करूची o डैश कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव करूची सेटा को हमें कहबा इनर्शियल फ्रेम ओके जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी बा रेस्ट रे अछि ताको हमें कहबा इनर्शियल फ्रेम जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाउनी बा एक्सेलरेशन अछि तारो एक्सेलरेटेड फ्रेम ताको हमें कहबा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके सो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढिबा काइनेटिक एनर्जी केमति बाहर करचंती ओके केमति एंगुलर मोमेंटम बाहर करचंती सिस्टम ऑफ पार्टिकल लो देन हमें धीरे धीरे रोटेशनल डायनामिक्स आड़ को जिबा ओके तो आज पे एति थाओ फिर नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा सो थैंक यू।